Srimad Swami Srikarananda ji Maharaj, who will speak life and teachings of Sri Ramakrishna in Hindi. परम पूज्य प्रेसिडेंट महाराज, श्रद्धेय वाइस प्रेसिडेंट महाराज, श्रद्धेय जनरल सेक्रेटरी महाराज, श्रद्धेय भजनानंद जी महाराज, उपस्थित श्रद्धेय एवं प्रिय सन्यासी एवं ब्रह्मचारीगण एवं श्रोतावृंद, आज का युग विज्ञान का युग है। आज का जो वैज्ञानिक मानव है वह प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा जो यह अनुभव में आने वाला विश्व ब्रह्मांड है, इसी को वह मानता है। पर यह विश्वास के आधार पर नहीं मानता, वह इसका अच्छी तरह से परीक्षण करके तब इसे मानता है। वहीं धर्म परोक्ष स्वर्ग नरक में विश्वास करने की बात करते हैं, पर स्वर्ग नरक तो प्रत्यक्ष में अनुभव में नहीं आता, इसीलिए आज का जो वैज्ञानिक मानव है उसकी उस पर आस्था नहीं बनती। वास्तव में देह के साथ आत्मभाव करके ही ये प्रत्यक्ष का व्यवहार होता है। और जब धर्मशास्त्र परोक्ष स्वर्ग नरक की बात करते हैं तो वहाँ पर मानो वह जो जीवात्म भाव है उसकी धारणा बनाना होता है, क्योंकि स्वर्ग नरक में देह तो नहीं जाती, वहाँ तो जीव ही जा सकता है। और अधिकांश धर्म इस परोक्ष की धारणा तक ही रुक जाते हैं। वहीं वेद उसका बल्कि वह जो ज्ञान कांड है वेदांत, इसके भी परे जो सबकी आत्मा है, जो इंद्रियों के अनुभव में तो नहीं आता इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है, जो स्वर्ग नरक की तरफ दूर परोक्ष भी नहीं है, क्योंकि सब समय सभी अपने आत्मा को अहम के रूप में, मैं के रूप में अनुभव करते हैं, इसीलिए उसको अपरोक्ष कहते हैं। तो वेदांत कहता है कि इसी देह में रहते हुए हम इस अपरोक्ष आत्मा को उस अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आज के इस अनुभव प्रधान युग में इसीलिए, क्योंकि यह जो अपरोक्ष अनुभूति है, इसी को भक्ति की भाषा में भगवान लाभ कह सकते हैं। यह जो ब्रह्मात्म भाव है यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, अर्थात जिसको अनुभव होता है उसके अलावा दूसरों को इसका अनुभव नहीं होता, इसलिए इस स्थिति के बारे में संदेह बना रहता है। इसीलिए आज के इस अनुभव प्रदान जो विज्ञान का युग है, उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जिसके जीवन में निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो कि उसे यह अपरोक्षानुभूति या भगवान लाभ हुआ है। यही नहीं, जो व्यवहार में, इस प्रत्यक्ष के व्यवहार में कुछ ऐसा आभास भी दे कि दूसरों को भी इस आनंद अवस्था के संबंध में आस्था और विश्वास हो सके। और इसके साथ ही यदि कुछ अन्य लोगों को भी वह इस अपरोक्षानुभूति करा सके तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत की भांति की सार्वजनिकता, इस सिद्धांत की सार्वजनिकता सिद्ध और प्रमाणित हो सकती है।
इसी दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव के जीवन को देखने की चेष्टा करेंगे। विज्ञान इंद्रियों के अनुभव को ही स्वीकार करता है, पर विज्ञान साथ ही यह भी बतलाता है कि प्रत्येक इंद्रिय उसके अनुभव की एक सीमा है। यह संपूर्ण इस विश्व ब्रह्मांड को कोई भी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती। उस इंद्रिय अनुभव को यंत्र थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं, परंतु इसका जो अनुभव है वह मानो पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि निस्संदेह विज्ञान हमारे जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है, परंतु अनंत को जानने की इच्छा और उसका ज्ञान किसी अन्य माध्यम से पाना होगा। हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, किसी वस्तु का अभाव हमारे भीतर हमको बेचैन कर देता है और विज्ञान वस्तु हमें उपलब्ध करा देती है, पर हमारा अभाव बोध नहीं मिटता। इसीलिए फिर किसी दूसरी वस्तु का अभाव हमको बेचैन अशांत बना देता है, और यह अभाव बोध हमारे जीवन में तभी दूर हो सकता है जब हमारी अपूर्णता का जो अज्ञान हमारे भीतर है वह दूर हो सके। और यह अपूर्णता का अज्ञान दूर तभी हो सकता है जब हमें अपने पूर्णता का ज्ञान हो। तो ये जो ब्रह्म की धारणा है, प्रभु की, ईश्वर की धारणा है कि वे पूर्ण स्वरूप हैं, तो ये जो अपरोक्षानुभूति है, यह मानो वह पूर्ण का अनुभव है, और उस अनुभव के बाद ही हमारे जीवन का अभाव बोध दूर हो सकता है। हमारे जीवन में ये जो अशांति है वह दूर हो सकती है। इसलिए यह जो अभाव बोध को दूर करने का अपरोक्ष अनुभूति है, इसका माध्यम, इसको जानने का माध्यम ही आध्यात्मिकता कहलाता है। और वास्तव में धर्म का असली प्रयोजन तो, वास्तविक प्रयोजन तो यही है कि इस व्यावहारिक जगत में, व्यवहारिक संसार में व्यक्ति को ऐसा कोई अनुकूल वातावरण दे जिससे वह अपने जीवन की आध्यात्मिकता को बढ़ा सके। धर्म के व्यावहारिक दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक तो जिसे हम सदाचार कहते हैं, अर्थात जो हमें उस पूर्ण की ओर, सत्य की ओर ले जाए, वह है सदाचार। तो सदाचार है वास्तव में धार्मिक बनना। और दूसरा होता है लोकाचार। यद्यपि लोकाचार उस धर्म मत की जो परंपरा है उसको बनाए रखने का माध्यम है, परंतु यहाँ क्रिया अनुष्ठान दूसरों के सामने करते हैं, और इसीलिए प्राय लोकाचार में अपने आप को धार्मिक दिखाने का भाव आ जाता है, और इसीलिए प्राय लोकाचार हो जाता है धार्मिक दिखना। अधिकांश प्रायः हम लोग धार्मिक होते हुए भी प्राय लोकाचार में ही अटके रह जाते हैं। इसीलिए वह धर्म का जो अमृत फल है उससे वंचित रह जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा अच्छी तरह अध्ययन करके देखें तो देखेंगे सभी धर्मों के सदाचार प्राय एक से दिखाई देते हैं, परंतु जो लोकाचार होते हैं वे उस धर्म या मत के प्रणेता या महापुरुषों के जीवन का अनुकरण होता है, और अनुकरण प्रायः बाह्य आचरण का होता है। और इसीलिए देश और काल की परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उस लोकाचार में बहुत सी विसंगतियां भी आने लगती हैं। और यदि हम थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करें तो देखेंगे धर्म के नाम पर जितना विवाद और झगड़ा होता है
वह अपने अपने लोकाचार को ही ठीक मानकर जब दूसरों पर हम थोपने की चेष्टा करते हैं तभी यह होता है। और इसीलिए लोकाचार और सदाचार ये धर्म के जो व्यवहारिक पक्ष हमें देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन को देखें, उस समय जो परिस्थितियां थी, जो लोकाचार थे, वे अत्यंत ही संकीर्ण और संरक्षणशील थे। हम आप जब जानते हैं श्री रामकृष्ण देव उसका एकदम बहिष्कार करते हुए नहीं दिखाई देते। उसे वे जैसे समाज की परंपरा थी उसके अनुसार पालन करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु धीरे धीरे अपने सदाचार से उसको उदार बनाते हुए दिखाई देते हैं। और यही बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने इसी को भारत में प्रचारित किया। श्री रामकृष्ण देव के जीवन को भी देखें तो उनकी आध्यात्मिक साधना किसी गहन जंगल में नहीं हुई थी, किसी एकांत गुफा में भी नहीं हुई थी। आप सब जानते हैं वो यहीं, उस समय तो यह कोलकाता अंग्रेज़ों की राजधानी थी, इसमें यह दक्षिणेश्वर के मंदिर के परिसर में हुई थी। और श्री रामकृष्ण देव की जीवनी उन्हीं के शिष्य स्वामी शारदानंद जी ने, जैसा कि श्री रामकृष्ण से सुना होगा, और फिर श्री रामकृष्ण देव के भांजे श्री हृदय राम से पूछ कर, क्योंकि श्री हृदय राम श्री रामकृष्ण देव की साधना के काल में सब समय छाया के समान उनकी सेवा में थे, उनसे पूछकर प्रामाणिक तथ्यों पर आधार करके ही उन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी। उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव के जो उपदेश हैं, हम आप सब जानते हैं कि किस प्रकार मास्टर महाशय ने सुनकर उनको लिखते जाते थे और उसी को फिर हूबहू उन्होंने कथामृत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। मानो ये श्री रामकृष्ण देव का जीवन एक ऐसा उसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगों की सफलता बतलाने के लिए सार्वजनिक रूप से उसका परीक्षण करता है और तब उसके निष्कर्ष की सत्यता प्रमाणित करता है। उसी प्रकार मानो वह जो वेद पुरुष हैं, धर्म श्रेष्ठा हैं, वे श्री राम कृष्ण देव के रूप में मानो आविर्भाव होकर मानो धर्म तत्व, धर्म की मानो यथार्थ रूप क्या है, यह अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बनाकर वह आध्यात्मिक साधना करके हमारे सामने सार्वजनिक रूप से दिखाई देते। और श्री रामकृष्ण देव की वह पहली साधना देखें, पुजारी के रूप में दक्षिणेश्वर के मंदिर में वह अपनी साधना आरंभ करते हैं। उस समय पूजा के निमित्त जो औपचारिक मंत्र है वह श्री केनाराम भट्टाचार्य से उन्होंने लिया था, परंतु उसके बाद की उनकी साधना में गुरु का कोई साथ नहीं था। श्री रामकृष्ण देव शास्त्र के भी पंडित नहीं थे कि शास्त्रों की सहायता ली। अपनी निजी वह जो व्याकुलता है, सत्य को जानने की वह उनकी तीव्र जो आकुलता है, उसी के भरोसे मानो वह उनकी साधना चलती है। और जब वह व्याकुलता मानो अपने चरम इस पर पहुंचती है, तब आप सब जानते हैं, जैसा श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं कि एक दिन जगन माता के श्री विग्रह से वह चैतन्य प्रकाश फैलता गया और मैं भी उसमें विलीन हो गया। मानो यह श्री रामकृष्ण देव की जो साधना का यह निष्कर्ष है, यह दिखलाने के लिए है कि चैतन्य स्वरूप, शास्त्र कहते हैं इसलिए हम अपने इसे ना माने, चैतन्य तो हमारा सहज स्वभाव है, स्वरूप है। शास्त्र तो मात्र उसका अनुवाद करते हैं, परंतु
क्या श्री रामकृष्ण देव की यह अनुभूति प्रामाणिक थी क्या? उस समय भी आप हम सब जानते हैं अन्य लोगों को संदेह होता था श्री रामकृष्ण देव की अवस्था की। वैद्यों से भी कई बार इलाज कराया गया, उनकी माता को भी इसके बारे में संदेह होता था। इस प्रकार के 4 वर्ष की अवस्था के बाद वहाँ पर फिर वह भैरवी ब्राह्मणी आती है। वे एक सिद्ध वैष्णव और तंत्र साधनाओं की सिद्ध महिला थी। वैष्णव और तंत्र शास्त्र की अच्छी पंडिता ज्ञाता थी। वे श्री रामकृष्ण देव की वह अवस्था देखती हैं, उसको बहुत पास से निरीक्षण करती हैं और तब वे उसकी तुलना चैतन्य महाप्रभु के अवस्था से करती हैं। चैतन्य महाप्रभु आप हम सब जानते हैं, वे कोई पौराणिक चरित्र नहीं, वे ऐतिहासिक चरित्र हैं। यहीं बंगाल में 400 वर्ष पूर्व करीब, और वे अवतारी महापुरुषों के रूप में उनकी पूजा भी होती है। और उनकी वह जो जीवनी है, उनकी वह जो भावावस्था है, उसका वर्णन उनके समकालीन उनके जो शिष्य थे उन्हीं लोगों ने लिखी थी। मानो वह एकदम प्रामाणिक उसका वर्णन है। तो श्री रामकृष्ण देव की अवस्था को उससे तुलना करके तब भैरवी ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण देव को भी उसी प्रकार से अवतारी महापुरुष सिद्ध करती और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उस समय के तत्कालीन जो वैष्णव आचार्य थे, वैष्णव चरण, और उसी प्रकार तंत्र के आचार्य थे श्री गौरी पंडित, उनको आमंत्रित करते हैं और वे भी उनकी बात से सहमति प्रकट करते हैं। और इसके बाद का श्री रामकृष्ण देव का जीवन हम आप सब जानते हैं, छोटे बच्चे के समान हो जाता है जो अपनी माँ के साथ मेले में घूमने जाकर विभिन्न खेलों का आनंद लेता है। उसी प्रकार मानो श्री रामकृष्ण देव इस धर्म के मेले में जो विभिन्न मतों के साधना के खेल हैं उनका आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं और माँ का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, अर्थात जगन माता ऐसे हर एक मत के सिद्ध महापुरुषों को वहाँ दक्षिणेश्वर में ले आती है और श्री रामकृष्ण देव उनके पास वह साधना करते हैं कि और उनको जो अनुभव होता है उससे वह अपने उस अनुभव की तुलना करते हैं और तब ये कहते हैं कि जितने मत उतने पथ। मानो वही जो अनुभूति है अपरोक्षानुभूति की ओर ले जाने के लिए ही ये धर्म मत है। किसी भी साधना में सिद्ध होने के लिए श्री रामकृष्ण देव को 3 दिन से अधिक नहीं लगता था। इसका कारण यह था कि वे लोकाचार को छूते हुए सदाचार में उठ जाया करते थे और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने सर्वधर्म समन्वय की बात कही, अर्थात जितने धर्म मत हैं उनका समन्वय व सदाचार में हो सकता है। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात नहीं कही क्योंकि लोकाचार में भिन्नता होती है। और इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव का वह जो जीवन हमें दिखाई देता है, उसके बाद आप सब जानते हैं उनकी वह जो भावमुख अवस्था, जब उन्हें भाव समाधि होती है तो मानो प्रत्यक्ष में दूसरे लोगों के सामने वे तो उसका अनुभव तो नहीं कर सकते, परंतु उनकी अवस्था देखकर उनको यह विश्वास और यह आस्था बनती है कि इस प्रकार की अवस्था हो सकती। मानो यह भगवान लाभ हो सकता है, यह ब्रह्मात्म भाव हो सकता है, अपरोक्षानुभूति हो सकती है, या आस्था और विश्वास मानो वे जगा देते। और यही नहीं, इसके बाद हम सब जानते हैं कि उनके वह जो युवक शिष्य थे जो सन्यासी बने, उनके जीवन में तो हम जैसा पढ़ते हैं कि उनको वह अपरोक्षानुभूति की
का अनुभव कराते हैं। और यही नहीं, 1 जनवरी 1886 की घटना आप सब जानते ही हैं। वो कल्पतरु दिवस में मानो गृहस्थ भक्तों को भी उसकी अनुभूति कराते हैं। और उसके साथ यदि हम देखें तो श्री माँ शारदा का जीवन और अन्य श्री रामकृष्ण देव की जो महिला भक्त थी उनके जीवन को देखें तो हमें निश्चय यह विश्वास होता है कि उनको भी यह अनुभूति हुई थी। मानो यह जो सार्वजनिकता, और इसीलिए तो स्वामी जी इतना विश्वास के साथ बोल सके, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। मानो श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन से यह दिखा जाते हैं। आज के इस संशयी विज्ञान के युग में एक ऐसे ही व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। और श्री रामकृष्ण देव एक बहुत सहज मार्ग भी दिखा देते हैं, जैसा कि अभी भजनानंद जी से भी आपने सुना, शिव ज्ञान से जीव सेवा। उसी को स्वामी जी ने ज्ञान की भाषा में हम कहें आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का। यहाँ किसी वर्ग का हित नहीं, किसी मत अपने मतावलंबी का हित नहीं, पर जगत का हित। इसमें आप देखें लोकाचार भी है और सदाचार भी है। जो सेवा या जगत हित का कार्य है वह तो लोकाचार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, पर सदाचार जो सेवा करने वाला है उसका व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है, वही समझ सकता है कि किस प्रकार कितना वह अपरोक्षानुभूति की ओर या अपने जीवन के उसका वह अभाव बोध अब उसको व्याकुल नहीं करता। अब उसके भीतर में मानो आत्मतृप्ति का भाव यदि बढ़ता है तो हमें समझना चाहिए कि ठीक ठीक सदाचार की ओर हम चल रहे हैं। इस प्रकार से इस वैज्ञानिक युग में श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने प्रत्यक्ष अपने जीवन से वह वेद का वह जो अमर मंत्र है वह हमारे सामने दिखा जाते हैं और हमें भी विश्वास दिला जाते हैं कि हम भी अपने जीवन में उसको अनुभव कर सकते हैं। उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हुए कि हमारे भीतर भी हमारी क्षमता है कि नहीं, पर जैसा कल्पतरु दिवस में सब पर उन्होंने कृपा की थी, हम पर भी कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। My respectful pranam to most revered Srimad Swami Bhajanananda ji Maharaj, who will speak life and teachings of Ramakrishna Paramahansa Dev in English. त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्ते कलौ पूर्णावताराय श्री रामकृष्णाय ते नमः। परम पूज्यपाद प्रेसिडेंट महाराज के हमार सश्रद्धा प्रणाम जानाई, पूज्यपाद वाइस प्रेसिडेंट महाराज के हमार प्रणाम जानाई, पूजनीय जनरल सेक्रेटरी महाराज एवं उपस्थित प्रवीण सन्यासी देव हमार सश्रद्धा प्रणाम जानाई, बाकी उपस्थित सकल के हमार नमस्कार। We are celebrating the 175th birth anniversary of Bhagavan Sri Ramakrishna. It means 175 years of Bhagavan Sri Ramakrishna's avatar Leela, 50 years of Martya Leela, and 125 years of Amartya Leela. During these 125 years of Amartya Leela, Sri Thakur's life and message has spread to most parts of the world.
and have influenced countless numbers of people. Directly or indirectly, through Swami Vivekananda and other leaders, Sri Thakur's message has contributed much to the creation of the present Indian society and the creation of the Indian nation. To some extent, Sri Thakur's message and life and message have influenced the creation of the present world thought also. All this is wonderful and important, but the 175th birth anniversary beckons us to something more. This celebration of the 175th birth anniversary is a clarion call to all of us to wake up to the greater possibilities which the message of Sri Ramakrishna holds, not only for us but for the whole of humanity. There are 2 points about this. One is the immense possibilities that the message holds for the future of humanity, and secondly, the significance of Sri Ramakrishna's avatarhood for the future of humanity. First, about the possibility of his message. Swami Vivekananda, Swamiji, towards the end of his famous article on modern India, Swamiji writes, Jai Shaktir Unmesh Matra Diganta Vyapi Pradidhani Jagrat Hayache She Mahashaktir Purna Avastha Kalpanay Anubhav Karo. কত লোক কল্পনায় অনুভব করেছে না করতে পেরেছে বলতে পারি না, কিন্তু একটা কথা বলতে পারি যে এই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সময় এসে গেছে। The 175th birth anniversary reminds us that we have to give greater attention to the possibilities of Sri Ramakrishna's message, especially for the future of India. As you all know, tremendous changes are taking place in India. According to many recent estimates, our nation is expected to become an economic superpower in another 20 years. So many countless opportunities are open to our young men. A great and bright future is awaiting. Whole society is undergoing tremendous transformation. What the youngsters, present generation and the future, what they need is a message of faith, a message of hope, a message of strength, a message of purity, morality, a person on whom they can center their love and affection, on whom they can depend on in times of difficulties, a person to whom they can turn as a source of power. All this is embodied in Sri Ramakrishna's life and message, and how this message can be made accessible and also understandable to the present and the future generations of young people. That is what we have to think deeply. Another point is the Sri Ramakrishna's message is not meant only for the devotees, for his devotees and followers, but for the whole of humanity. It is not meant only for even Hindus or for Indians.
but for all the people all over the world, the humanity. It was this understanding that made Swamiji go to the West and work hard. He sacrificed his life for this work. Swamiji, after his return from America, in the course of his well-known talk with Swami Yogananda Ji Maharaj, Yogananda Ji Maharaj expressed his doubt whether this what Swamiji was doing was in accord with the teachings of Sri Ramakrishna. Then Uttejita Kanthe Swamiji बोले तिनी मैंने ठाकुर तिनी अनंत भावमय ब्रह्मज्ञानेर इयता होतो किंतु प्रभुर सामान्य भावेरो इयता नहीं. The Sri Ramakrishna's the message, the idea is the embodiment of infinite ideas. Ananta Bhavamai. This embodiment of infinite ideas, it takes centuries for the implied, the possibilities of the message of an avatar to be worked out. But now itself we have to understand that possibilities. It is meant not only for the for the devotees, it is for the whole humanity. How, and now if you look around, you can see tremendous changes are taking place in the world society. And so how this message can be made accessible and understandable to people belonging to other religions, other cultures, other parts of the world. That also is a subject which we have to think deeply. Third point is about the significance of, universal significance of Sri Ramakrishna's avatarhood. We, especially after reading Kathamrita and teachings of Sri Ramakrishna, we gain greater understanding of the humanity, the human side of Sri Ramakrishna, but not so much about the divine side also. That is also equally important. Swamiji said, with the birth of Sri Ramakrishna, a golden age, the Satya Yug, has begun. If you look around, many of you may ask the question, where is Satya Yug? If you read the newspapers, what attracts our attention first everywhere, the radio, and when you look around, it's all mostly enormous increase in violence, crime, immorality, terrorism, corruption, and so on. But these are the shadows which darken our present day world. But if you look beyond these shadows, we can see a new world emerging, and the golden rays of a new dawn breaking upon the horizons of this of the modern world. There is now a kind of collective spiritual awakening of the human mind. One of the most important modern major trends in world thought and culture is known as the global spiritual movement. There is a great upsurge of interest in spirituality all over the world. Recently, in America, a poll was conducted about the faith of the people. 36% of Americans said they are not religious, but they are spiritual. So the idea that spirituality is something different, separate from religion, and it's an independent movement. Sometimes it is known as the secular spiritual movement or global spirituality. The spirituality is now an important subject even in academic circles. Those who go for MBA course, spiritual life is an essential part of their syllabus also, because owing to the rapid changes in society and the modern types of the fast
way of our life and work, enormous increase in tension and stress, and people have found meditation, Zen, Vipassana and other spiritual techniques, they help greatly in reducing tension, stress in life, and various other reasons. Moreover, people understood the importance of having a spiritual perspective to face the challenges of life, to take correct decisions and make one's life meaningful. For all these reasons, spiritual life has now become an important part of the modern world culture. Is in this context that we have to understand the great importance of Sri Ramakrishna's role. As the avatar of the present age, Sri Ramakrishna has a great important role to play in the spiritual awakening. Swamiji also believed that the whole world is going towards an ultimate spiritual goal. In one place, Swamiji writes, a time will come when rishis, that is prophets, will walk along the streets of the cities, and colleges and schools would be training grounds for prophets. That's what he was seeing, evidently a vision. Swamiji was seeing far ahead of the present time, the vision of the future. It is in that, then only we can understand the immense significance of Sri Ramakrishna's avatarhood. Regarding avatarhood of Sri Ramakrishna, there are four aspects of Sri Ramakrishna's avatarhood which need our special attention and study. One is his divine life. Second is his divine actions, active karma. The Gita says, Janma karma cha me Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattvataha. So Janma and karma, life and actions. And also the third one is his message. And lastly, his name, the divine name. These are the four aspects of the avatarhood of Sri Ramakrishna. First, about his life, divine life. So going to want of time, I omit that. Moreover, many people, most of you know about it. The second thing is about the actions, the functions of the avatar. How does an avatar function? The Gita speaks about dharma samsthapana, is the dharma samsthapanarthaya sambhavami. That is only one of the functions. We read the commentaries of Shankara, Ramanuja, Madhva, Madhusudana and others, you will find these acharyas have shown that avatara has got several other functions also. About 10 functions of the avatar can be identified. And all these 10 functions Sri Ramakrishna performed. So owing to lack of time, I just mention only just one, and that is the avatara as the liberator. As a liberator, one who gives liberation to others. Swamiji was once asked, who is an avatar? Avatar kake bola hai. Swamiji said, Kapal Mochan, avatar Kapala Mochan. Kapal, the one who can change the destinies of human beings. What is meant by destiny or Kapal? Every action we do has two effects, drishta and adrishta. The drishta effect work that we all know, if we want to do any kind of work, we do it with some motive, with some result in view. This is what Sri Krishna asks us to give up. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu. Their phaleshu means this drishta phala. But apart from the drishta phala, there is an adrishta phala also. If you do any karma, sakama or any karma with some motivation, that will also deposit as a karmic residue in an unknown way or an unknown realm, place. That is known as that also is known as Sanchita karma. It is the Sanchita karma that
becomes manifested as the prarabdha and leads to the rebirth. So if you want mukti, you should be free from the sanchita karma. So how to destroy sanchita karma? That is the only way to attain mukti. Mukti means destruction of sanchita karma. So for that, there are jnana marga, advaita, that is one method is through ignorance. By Brahma Jnana will destroy ajnana, and so everything will go. But for bhaktas, the other method is God's grace. God's grace destroys the sanchita karma. Ramanuja says, kartum akartum anyadhava kartum shakyate. God can either allow the person to enjoy, experience the prarabdha, or modify it, or completely nullify it. So this is sanchita karma, that is our prarabdha, that is what popularly we speak of as kapal. So this only God alone can destroy or change or modify. And God, and of course avatar. So avatar is one who can change the destinies of the people. That's why Swamiji begins his great hymn which we chant every day, Khandana Bhava Bandhana. The Khandan, Bandhan ke Khandan Koren. Bandhan mane this bandhan to the wheel of samsara. That only an avatar can destroy that. That is the one function of the avatar as the liberator. We pass on to the next piece about the message. The message of Sri Ramakrishna. Message of Sri Ramakrishna has got two aspects. One is the philosophical aspect, and other is the practical aspect, practical Vedanta. Sri Ramakrishna's message is a part of the expression of the India's 3 millennia year old Vedanta, the philosophical culture, traditional culture known as the Vedanta. He was one of the greatest of the exponents of Vedanta philosophy. Many people think that Sri Ramakrishna, because he didn't have much formal education, he didn't have much independent philosophy. But actually, if you study his Kathamrita and other teachings, you can see Sri Thakur had a very clear understanding of Vedanta, and he developed an independent system of Vedanta. Though it is mostly Advaita, since he accepted other schools of the schools of Vedanta also, we may call it integral Vedanta. That is what Sri Thakur taught. But that doesn't mean Thakur talked about Vedanta philosophy. There is a world of difference between philosophy and message. The message of the avatar, the different message is charged with power, whereas philosophy doesn't have power. It is just like the river. A flowing ordinary river which flows has only very little energy. It can be used for drinking water or for irrigation. But the same waters of the river, when it is sent through the giant turbines of a hydroelectric project, it acquires tremendous power. Tens of thousands of megawatts of electricity is generated. The same way, the philosophical concepts, when they are lived and energized by the avatar, they acquire tremendous power. It is like to give an example, the Katha Upanishad states, Uttishtata, Jagrata, Prapyavaran Nibodhata. More than 2000 years, people have been chanting. This has been chanting. And then came Swami Vivekananda. When he said, arise, the whole nation, thousands of people rose. They rose to their feet. When Swamiji said, awake, the soul of India woke up. And when Swamiji said, stop not till the goal is reached, India started moving. It is now still, India is now advancing fast. So that is the power of the words of the prophet. And just one more example, in the Brihadaranyaka Upanishad, it is stated, Nava
Are patyu kamaya patipriyo bhavati. The husband is loved not for the sake of the husband, but for the sake of the Supreme Self. The wife is loved not for the sake of the wife, but for the sake of the Supreme Self. This had been lying in the books unknown, and it is locked in the books and in the hands of a few people. Then Sri Ramakrishna came by doing the Shodashi Puja to his divine spouse. Sri Ramakrishna brought out and charged with power. And then this idea of Shiva Jnana Jiva Seva, Swamiji spread everywhere as the basis of his gospel of service. It acquired tremendous power. So the message is, the philosophical concepts by themselves do not have the power. It is the prophet who gives power to these words. About this message, if you can see, there are several points about Sri Ramakrishna's message. There is no time, just I will mention three. It is enough if you keep in mind three major points in Sri Ramakrishna's message. One is the divinization of life. It is a new idea, the divinization of life. The second is well known, everyone knows, Dharma Samanvaya or harmony. Harmony of religion, different types of harmony. And third one is Shiva Jnana Jiva Seva. The first one, divinization of life. As everyone knows, Sri Ramakrishna's famous, most important, well-known teaching, Ishwar Labhai Manush Jivaner Uddeshya. The question may arise, how is it possible for all people to realize God? How many people have realized God? The answer is given by Swamiji. God realization is not something you wait for a future, suddenly God will appear. It is something you begin right now. You begin right now, manifest the divinity, start beginning transform our human life into divine life. It is a process which you bring in now itself. So divinization of life, it is not something you have to wait for the future, right now. So this is the way Swamiji has interpreted Sri Ramakrishna's idea of God realization. It is meant for all people. All of us can do it right now. That is one. Second one is about the Samanvaya idea, harmony. That is well known. I don't want to touch upon it. Third one is Shiva Jnana Jiva Seva. That all the Ramakrishna mission activities are based on this. That's also well known. Then one more thing, that is practical aspect. Just as Swamiji had a practical Vedanta, Sri Ramakrishna also had a practical Vedanta. Just one anecdote mentioned. The Thakurer at a golpe ache. Dujan sadhu Brahman korte korte at a shohare এসে পড়েছিল। একজন দেখলো আরেকজন হাঁ করে দোকান বাজার সব দেখছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি হাঁ করে সব দেখছো, তোমার তল্পা কোথায়, মানে জিনিসপত্র কোথায় রেখেছো? তখন ওই সাধু বলল, আমি প্রথমে আগে একটা বাসা পকড়ে জিনিসপত্র এখানে রেখে ঘরে তালা দিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে এই বাসা পকড়া বাসা স্বামীজি ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে এই গল্প বলে তা জিজ্ঞাসা করলেন, বিজয় তুমি বাসা পকড়েছ? সো দিস এ কোয়েশ্চেন টু অল অফ আস। বাসা পকড়েছ মানে হোয়াট ইজ দিস বাসা? বাসা মানে আমাদের নিজ স্বামীজির গান Mano Chalo Nija Niketan, the Niketan, our own real abode, the dwelling place, and that is the Atman, the Pratikatman, the inner self. Our real nature is not the body or mind, but the inner self. That is to be first understood. And once that is known, then you can mingle with the world without any. That's why Thakur used to say, tie the Advaita Jnana in the corner of your cloth and then you may do whatever you like. In this way, through simple stories, the deep, profound truths of Vedanta and spiritual life, Thakur has expressed. This is only just an example.
finally we come to the divine name. And but one distinguishing feature of an avatar is he has got a divine name, a special mantra. Mantras are become popular. Not ordinary saints don't have mantras. Only God and avatars have got mantras, divine mantra. ঠাকুরের মন্ত্রের সম্পর্কে আমাদের চণ্ডিকানন্দজি মহারাজের একটা গানে আছে, অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত করো। যারা মঠ অ্যান্ড মিশন আমরা সকলে যারা দীক্ষিত, আমরা সকলে জেনে রাখা উচিত যে আমরা আমাদের সকলে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। আমরা যা মন্ত্র যে ঠাকুরের নাম এটা ইট ইজ এর অগ্নিমন্ত্র। গীতা সে অধ্যয় ধামসি সমিদ্ধ অগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুনা। Just as the fire burns a blazing fire burns down the logs of wood, the same way the jnana, there Krishna speaks about jnana destroys the karma, past karma. This is true of the mantra also. The mantra also, Agni mantra, that also destroys the karma, the bondage of karma, that also bhasmasat kurte. So this power of the divine name, so we are all great blessed to have this mantra. It's a great support and protection in our life. Lastly, I will conclude this with one small anecdote in Buddha's life. Buddha, after the attainment of Bodhi, he remained under three different trees for 7 weeks under each tree. He was reluctant to come out and preach because he thought nobody will understand my message. Then the gods, the devas went to him and told, no, you come out and you speak out. Some people will understand. Then Buddha decided to come out and spread the dharma pravartana. He decided to do that. At that time, the devas chanted, Ashariri, the Vani came, and that is apavrutam tesham amritasya dwaram he shrotrvantaha pramunchantu shraddham. Apavrutam tesham amritasya dwaram. Hey shrotrvant, those who have got ears to hear, let them hear. The gates opened are the gates of immortality. The gates of immortality, amritasya dwaram, is now opened. And what we have to do is pramunchantu shraddham. You have to release the faith. Our faith, everyone has got faith in him, but that is bound, that is constricted by various kinds of doubts and impurities of the mind. Let us release. All that we have to do is to release our faith, which is our inborn faith. This is applicable to the life of Sri Ramakrishna also. Let us release our faith, have full faith in the Purna Avataratva, the prophethood, the avatarhood of Sri Ramakrishna, and the immense possibilities that it holds for us, for all of us, and for the future of humanity. Thank you all. Sri Ramakrishna Arpanamastu. Om Jananim Saradam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayoshutva Pranamami Muhurmuhu. परम पूजनीय स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशनरी परमाध्यक्ष को ताकि हमार प्रणाम जानाई एवं हमार गुरु भाई राम जा सुंदर भाषण दिलेन एवं अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंदो हमार एवं समवेत भक्त मंडली আমাকে কেউ কেউ বললেন ইংরেজিতে বলতে, কেউ কেউ বললেন বাংলাতে বলতে। শেষে আমি ঠিক করলাম
ইংরেজিতে আরম্ভ করব এবং বাংলা দিয়ে শেষ করব। না, এই আরম্ভ করলাম, এটা প্রিলিমিনারি ইন্ট্রোডাকশন। So, so we heard some very interesting speeches throwing a light upon various aspects of Bhagavan Sri Ramakrishna's life and teachings. I was reminded of what Swamiji said on his return to India in his Calcutta speech. He says, I would like to read it out to you. If this nation wants to take my word for it, if this nation wants to take my word for it, it will have to rally enthusiastically round this Ramakrishna Paramahamsa's name. It does not matter who preaches Ramakrishna Paramahamsa, whether I or you or anybody else. But him I place before you, and it is for you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life. One thing we ought to remember, that it was the purest of all lives that you have ever seen, or let me tell you distinctly, that you have ever read of. And before you is the fact that it is the most marvelous manifestation of power that you can read of or much less expect to see. So Sri Ramakrishna's life is so extraordinary that it gets an important place in the history of the world, not only in India but over the whole world. That is why even after 175 years of his sojourn, even now, so many books are being written on him, not only in India but abroad, because he throws light on the divine aspect of life. Most people, they carry on their humdrum lives in this world, seeing no other ideal placed before them. But it is Ramakrishna who comes, those who read him, read his life, read his message, they all find that there is something extraordinary. You may say that, oh, since ancient times we have followed this religion or that religion. So what is new about it? As it was pointed out just now, his life, his experience, everything was based on his actual experiences. Not reading the Shastras, not hearing even from others, but he practiced every one of those religions which he accepted as true paths to reach the goal through divine life. Why is it necessary? So here Swamiji emphatically says, this is a life, if you want this nation to rise, if you want this nation to show the path to the rest of the world, then you have to accept him, accept Sri Ramakrishna. So, what are those principles which Sri Ramakrishna preached? He lived that simple life at Dakshineshwar, but if you carefully analyze his life, you will find there are some special aspects in his life. First of all, I would say that it is rational. Why rational?
because he accepts everything according to his experience, spiritual experience, not simply the words of somebody. That is why when Swamiji as a student went to him and asked him, "Sir, have you seen God?" Earlier he went to various other people and he got only negative answers. But then only place where he got a positive answer was from Sri Ramakrishna. He said, "Yes, I have seen God and I can show him to you also." So that started a new way of life for Swamiji. For the first time he had heard that God could be seen, and here is a man who has seen God, who has experienced God. It is not seeing through the eyes, it is an experience. Just now it was said that Atman, the Atman, Navare Patu Kamaya Pati Priyo Bhavati, Atmanastu Kamaya Pati Priyo Bhavati. The husband becomes dear to the wife, not because he is the husband, but because there is the Atman. So what is this Atman which you don't see? But you can experience this Atman and know what you yourself are. The basic question comes up, and what we are. Are we the bodies? Are we the mind? Are you the buddhi? Or whatever else it is. So none of these, they are all outer coverings only. The innermost self, what the scriptures call the Atman. This Atma-jnana is the goal of Vedanta. This Atma-jnana is interpreted in various ways according to various paths of religion. So this Ramakrishna had experienced from different points of view, following different paths. This is something entirely new in the modern, in this world, in the world's history. Because, particularly in Europe in the 18th century, the Europeans thought that it is no more necessary to follow any religion. We can throw them overboard. We don't need any God or religion. But even after 100 years, or 200 years, after this kind of thought gained prominence, even after a long time, even today the question is being asked. There was an interesting book by scientists, why God does not go away. So God does not go away because it is true. And the truth shall make you free, as Jesus says. Seek ye the God, Lord, and the truth will make you free. So the free is what is called the moksha that was quoted just now. The moksha, kapala mochana. That means avatara has the ability, has the power to wipe out the earlier vasanas or karma, but not the current ones. So therefore, the life is, because based on experience, this life is rational, and it is possible to practice it, even for householders, even for ordinary people. For them also it is possible to practice it. He himself said that the coins of the Mughal times cannot be valid during the East India Company's regime. And now we have come further, we are living in independent India, and the coins of that time will not be applicable here, suitable here. Similarly, the various kinds of sadhanas, rituals, homa, etc., which was going on in India for a long time. Sri Ramakrishna said it is not necessary.
Because now you take the name of the Lord, sing the glories of the Lord, that is enough. So, for the modern man, he has made the spiritual life very easy. And then the religion preached by him is universal. It can be applicable anywhere. And then this humanistic aspect is there, which is very important for a modern man. Modern people give importance to the humanistic aspect. So very human things are going on also at the other end. But he humanistic. So some of these points I put before you, there is no time to explain, and my throat also is giving trouble. So, Sri Ramakrishna came specially for the modern age. Following him, we can make India great and help the whole world. আমরা বেশি সময় নেই, একটু স্বামীজি পাশ্চাত্য থেকে যখন ফিরে এলেন, তখন স্বামীজি বললেন এই দিস গ্রেট আইডিয়াল অফ লাইফ, এই আদর্শ কি ভগবান লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ওটাই গন্তব্যস্থল। এই জন্ম কর্মচ মে দিব্যম, Bhajanananda quoted from the Gita. The avatar's life is divine. Through the power of the divine, he brings welfare to the whole world. এই জন্য এই জন্ম কর্মচ মে দিব্যম, এই দিব্য জীবন কাকে জানতে হবে, তার উপদেশগুলোকে গ্রহণ করতে হবে, বলতে গেলে হজম করতে হবে, এবং আমাদের জীবনটাকে ঠিক সেই অনুসারে তৈরি করতে হবে। আর ঠাকুর স্বামীজি তো জানতেন ঠাকুর কেন এসেছেন, সকলে তো ভাবতে পারেনি। এই বলতে গেলে যে যার কোনো পড়াশোনা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কী করে কী করবেন। স্বামীজি এই জন্য তারা ভাবলো এটা সাধারণ জীবন, সাধু জীবন যাপন করলেই যথেষ্ট। স্বামীজি এসে বললেন না, এইসব করতে হবে, ভারতের উন্নতি সাধন করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম তার গুরুভাইরাই কেউ আপত্তি করেছিল, এটা তো প্রভু আমাদের গুরুদেবের নয়, উপদেশ নয়। স্বামীজি বললেন তোমরা কতটুকু জানো ঠাকুরকে। এই জন্য স্বামীজি জানতেন, এই জন্য শিবজ্ঞানে জীবসেবা ঠাকুরের সেই কথাটাকে কার্যকরী করলেন, এখনও করছেন। এখনও এই ধারণাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো একটা জায়গা থেকে ধরে নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। আর এইসব কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বামীজির শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী, শ্রী শ্রী তার সাধন পদ্ধতি ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু আধুনিক মানুষের জন্য, এবং আধুনিক যা যা ভ্যালিউস অফ লাইফ, যা যা মূল্যবোধ জীবনের, এসব শ্রী শ্রী ঠাকুরের জীবন থেকেই আমরা পাব। কিন্তু সেটার একটা স্পিরিচুয়াল বেসিস, আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ থাকবে, আধ্যাত্মিক একটা ভিত্তি থাকবে। সেই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে নিজের জীবনে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে। আর এবারে এই বেলুর মঠে
75 বছরের যে পরে এখন বেলুর মঠে দেখছি, যখন আরম্ভ হলো বারানগর মঠে কেউ কিছু জানতো না, কিছুই ছিল না। আজকে এত বড় কনফারেন্স এখানে হচ্ছে এবং অন্য অন্য জায়গায় ভারতবর্ষে দেশেও এই 175তম যে সেলিব্রেশন হচ্ছে চারিদিকে, এই করে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে উৎসবের মাধ্যমে, বই টইয়ের মাধ্যমে। আর আমরা এই পুণ্যস্থলে, এই পুণ্যতীর্থে, বেলুর মঠ পুণ্যতীর্থ, যেখানে স্বামীজি তার দেহ রাখলেন, মা এবং অন্য সকলে, অনেকেরই ঠাকুরের সন্তানরা সকলে অনেকেই এখানেই থেকে এখানেই তাদের মহাসমাধি লাভ করেছে। কাজেই আজকে এই শুভ দিনে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং এই উৎসব এখনও আরও 3 দিন চলবে। আজকে ঠাকুরের আসলে জন্মতিথি, তিথি পুজো, এরপরে পাবলিক উৎসব আছে রবিবারে। সবটা মিলিয়ে একটা মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করা আধ্যাত্মিক পথে, সেই আশীর্বাদ আমরা পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের কাছে পেয়েছি। ওনার আশীর্বাচনের মাধ্যমে আমিও এই আজকে এই পবিত্র সন্ধ্যায়, এই পবিত্র তীর্থস্থানে শ্রী শ্রী ঠাকুরের একটু অনুধ্যান করলাম। সে আরও সুন্দর ভাষণ সব শুনলেন। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা, স্বামীজি তাদের কাছে প্রার্থনা জানাই, সকলের হয়ে প্রার্থনা জানাই, নিজের এবং সকলের জন্য। তারা আমাদেরকে যে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে নিয়ে যান, আমাদের ঠিক দিশারি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যান, দেখিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে দেন, এই প্রার্থনা করব। এবং ওম নিরঞ্জনম নিত্যমনন্তরূপম ভক্তানুকম্পাদ্রকবিগ্রহম वै ईशावतारं परमेशमिद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।